छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार, बड़ों को मेरा नमस्कार। आपका स्वागत है इस YouTube चैनल पे जिंदगी का निचोड़, जहां आप ऐसे लोगों से मिलेंगे जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। और अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि आपके पास हमारी वीडियोस की अपडेट एट अ टाइम आती रहे। चलो इस जर्नी की शुरुआत करते हैं मिस्टर नरेंद्र नागपाल सर से। सर, आप अपनी हमारी प्यारी जनता को अपने बारे में कुछ बताइए। Well, I'm Narendra Nagpal, director of Pleasant Convent School, and I've been directing this school for past 11 years in Fatehabad city. It is situated at Dharamshala Road. I'm not only director, but I'm working as principal in this school too. तो सर, आपका जो ये स्कूल ओपन करने का, खुद का स्कूल ओपन करने का ये आइडिया आपने कहाँ से मतलब आया? It was my father's dream. My school basically is all for the poor people. Here we have got students from below middle class families or below middle class families. The purpose was to provide good education to the students and a good environment to the students. So that was in fact the purpose or intent behind, and it was my father's dream. Way back in 2010 I started this school in city Fatehabad. ओके सर, जैसे अपने अभी जैसे जैसे टाइम बढ़ रहा है तो जनरेशन गैप आ रहा है। जनरेशन गैप जैसे फैमिली में आप रहते हैं तो अपने जो सीनियर सिटीजन रहते हैं घर में, तो बच्चे रहते हैं, उनके जो सोच में मतभेद रहता है, एक डिफरेंस रहता है। जैसे अपने को घर में अगर कोई गाड़ी भी लेनी होती है ना, तो गाड़ी में भी एक ये रहता है भी बच्चों की सोच रहती है एक महंगी गाड़ी ले, लोगों को दिखाएं अच्छी गाड़ी हो, लेकिन बड़ों की सोच रहती है उतना ही पैसा खर्च करे गाड़ी पे जहाँ से अपना बस काम ना रुके इधर से। तो उस सोच को एक कॉमन डिसीजन पे लाने के लिए हम मतलब क्या कर सकते हैं सर? देखो, इसमें एक चीज़ है, आज हमारे यहाँ बच्चों में, और देखो अगर हम ओल्ड पेरेंट्स को देखते हैं, बच्चों को देखते हैं, तो हमारे यहाँ एक जनरेशन गैप और एजुकेशन गैप एक मेन है। आज के जो folk हैं, चलो यंगस्टर हैं, वो एजुकेटेड हैं, उन्हें लगता है कि जो हम कर रहे हैं वो ठीक है, और हमारे ओल्ड पेरेंट्स जो हमारे जो एक्सपीरियंस पेरेंट्स हैं, हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं, उन्हें लगता है कि जो यंगस्टर्स कर रहे हैं वो ठीक नहीं है। मुझे ऐसा लगता है कि जो यंगस्टर्स हैं उन्हें इस बारे में सोचना चाहिए, और यंगस्टर्स को एक्सपीरियंस लोग जो हमारे ओल्ड पेरेंट्स हैं उनके डिसीजन को भी उनको एक्सेप्ट करना चाहिए। लेकिन ये जो चल रहा है आजकल, आई एम सॉरी टू से बट इट्स नॉट गुड। आई मीन कमिंग जनरेशन जो आ रही है, जनरेशन या जो चल रही है, तो आई एम अफ्रेड कि वी आर नॉट गोइंग ऑन द राइट पाथ। मतलब सर, आप आज के स्टूडेंट के लिए मतलब आप क्या कहेंगे अभी? मतलब उनको पेरेंट्स की सुननी चाहिए या पेरेंट्स को बच्चों की सुननी चाहिए? देखो, मुझे ऐसा लगता है जो ठीक है, पेरेंट्स आर वेल विशर, तो पेरेंट्स बच्चों को समझना चाहिए कि पेरेंट्स आर देयर वेल विशर, जो उनके लिए कर रहे हैं, जो उनके अच्छे के लिए कर रहे हैं। वही बात जनरेशन गैप, एजुकेशन गैप, दैट इज what I feel is the major you can say major hurdle in the way between parents and student, or parents and kids should understand this कि they are the best well wisher of yours. So हमें उनको भी उतनी वेटेज देनी चाहिए, हमें उनको इग्नोर या उनको ओवरलुक नहीं करना चाहिए। जैसे आपके भी फैमिली में आपके सन है, तो वो अभी I have daughters only. You have daughters only. That's very good, sir. What they are doing, sir, right now? The eldest daughter she's preparing for PMT. She is in Rajasthan. She's in Sikar, where she is preparing for PMT, and younger one is studying over here in this school in class 6th. तो जो आपकी डॉटर है सर, उसके मतलब फर्स्ट अटेम्प्ट है, सेकंड नीट, सी मैच मेनली शी इज प्रिपेयरिंग फॉर नीट सर? हाँ, she has got through her 10th this year. It's her very first year. She is preparing for NEET. So far she hasn't taken any entrance test of NEET. But she's preparing for that. After 2 years, then she'll be eligible. In 2024, she'll appear for NEET. Okay, sir. Now she is in 11th standard. She's in 11th. Okay, sir. Sir, can you tell me what are the regrets of your life? See, regrets of my life, what I should say exactly, you see, I always believe that life is full of ups and downs, like, not in my life, in everyone's life. When you are on this earth, when you come on in this life, like, you have to pay everywhere. There are ups and downs. There are many regrets. But I never forget. I just move on. I just look forward. I don't think about them. Okay, sir. That's very good, sir. Sir, the life you have lived right now, are you satisfied with it or not, sir? I'm fully satisfied because my father had a great role. As long as he was there with me, like, he always encouraged me. I'm from a very good family. My family all supports me. Means
I'm lucky to be in such a family where I was born, or I'm very happy with my family. They always support me. There is, you know, I mean, I'm quite happy and quite satisfied. That's it, good sir. Sir, can you tell me the most afraid or means सबसे दुख की घड़ी आपकी लाइफ में कोई रही हो जिसमें no one has supported you? See, means as I said before, everyone supported me. दुख की घड़ी की बात करते हैं तो I guess the moment when I lost my father, that was actually a nightmare time for me. Means I cannot forget that when the day I lost my father, because my father had such a role in my life that I can never forget that. I miss him. I mean, whatever I am, it's all because of his blessings, because of his efforts I am. So, what is the happiest moment of your life? I guess there are so many happiest moments in my life. I was so happy when I was blessed with daughter. Yes, sir. That was the happiest moment in my life. That's really great, sir. Since, sir, if you go to your 20s teenagers age, what will you do in your life, sir? If I go back in, you want to say, Mullah, if I come back to that, if I go 20 years back of my Yes, life, sir. you want to say. You will get a new age. Yes. And Obviously, if I see, I really, I have soft corner for those parents. Like nowadays, we see the youngster, the kids, they are, getting into such bad habits. Like we see nowadays, intoxication, addiction of drugs, and nowadays in this area, we see that this chitta, we call that, like it's called like intoxication, yes, sir. So they are all getting into that, means that is not a good sign. But I feel if I go back in 20, suppose if you ask me, like if I go back 20 years back or 22 years back, so I would love to, give happiness to my parents. I will not get into such bad habits like, such sort of, this intoxications or chitta and all. I advise to the youngster to that they should also not get into that. If I go back, I'll obviously enjoy my life. I'll enjoy in that way. I can do for my parents, I can do for my family. If I can do good for my family, that is what I want. Yes. सर जैसे आजकल जो भी बच्चे हैं मतलब कोई भी एग्ज़ाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं या उनका कुछ अलग कैरियर है, कोई म्यूजिशियन बनना चाहता है, कोई वर्क करना चाहता है, कोई माउंट एवरेस्ट पे चढ़ना चाहता है, बट उनके लाइफ में प्रॉब्लम्स आ रही है. जैसे कोई बच्चा एग्ज़ाम दे रहा है तो उसके अगर नीट में या फिर जेईई मेन में सिलेक्शन नहीं हुआ तो ही इज जस्ट प्रोसीडिंग टू गो टू कमिट सुसाइड. ही इज नॉट शेयरिंग हिज व्यूज टू हिज पेरेंट्स. व्हाई ही इज नॉट एबल टू शेयर? That's very valid point you have made here. Like, I don't know why. See, what I feel about, like, as I watched movie Three Idiots, like that movie is a clear example. Like, sometimes, the parents are enforcing their kids to go for NEET or go for this JEE. Yes, sir. But what I feel about, like, let the student make your own way. What I feel, not in 100% like, cases, but we see in some cases where parents are enforcing their kids just to go for that. But I feel the parents should never enforce them. Secondly, the kids should also understand that it's not that the final attempt, like if you suppose are not able to crack your NEET or you are not able to crack your JEE. So since my daughter is now, preparing for that, if she doesn't get through her NEET, so what I'll advise her, and I'll advise her to, I'll advise her to go for the other chance or the next chance or for the next chance. But what I feel about, like, the parents should never enforce students to go. Whatever a child wants, if he wants to make career in any other field, let him go there. Let him choose that way. Not that we simply pressurize them or simply enforce them. Definitely, sir. Parents should support their children, but they want to do in their life. Yes. Firstly, they will do. After that, they give up. Then parents will tell youngsters should also not go for such path. Like, why do youngsters come under depression? They should never. I think they should live the life. It's a happy life. It's a good life. Like when you are on it, you have a beautiful life and enjoy your life. No, you should never think about that. There are 100 options for you. Yes, of course, sir. There are multiple options there. In today's era, means different careers are available there. Yes. The student have to go and be work there. 100 options are there. Yes, sir.
So my suggestion to them is like, should never think about that. Just go ahead or move ahead in their life. What is your last message for today's generation? पूरे जनरेशन जो आज इतना नशे में, जो इतना इसमें चल रही है, मैं तो ये एडवाइस करूँगा, आई एम सॉरी टू से दो आई हैव नो मच एज, बट एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन ऑफ दिस इंडिया, बट आई एडवाइज यंगस्टर शुड नॉट गेट इनटू इन सच bad habits. Respect your family, respect your country, or be always positive and move ahead. Life is beautiful. आई डोंट नो आप नशे में जाकर अपनी लाइफ को क्यों ख़राब कर रहे हो, आप अपने आप को क्यों ख़राब कर रहे हो, आप अपनी फैमिली देखो। एक नशे का बच्चा जो करता है, नशा करता है, वो सिर्फ अपने आप को नहीं, अपनी फैमिली को रुला देता है, अपनी फैमिली को ख़राब कर देता है। तो कम से कम उसको इस चीज़ पे ध्यान देना चाहिए। जब भी कभी वो इस चीज़ों में पड़ता है तो उसको पहले अपनी फैमिली को देखना चाहिए, अपने देश को देखना चाहिए। क्योंकि आज अगर हम बात करें इस शहर फतेहाबाद की, तो आज फतेहाबाद का नाम हरियाणा में बहुत आगे है नशे के नाम। मैं यंगस्टर्स को ये मैसेज करूँगा, पॉजिटिव रहें, पढ़ाई करें, डिप्रेशन में ना आए कभी, नशे में ना जाएं कभी। और लाइफ इज़ वेरी ब्यूटीफुल एंड दे शुड एंजॉय द लाइफ, दे शुड मेक द मोस्ट ऑफ दिस लाइफ। Thank you very much, sir, for your taking some. Thanks for interacting with me, or thanks. I mean, very much thankful to you, and I'll appreciate your job too. Like you are doing a great job, like by awareing people. आप जो है लोगों को बता रहे हो, आपने बहुत अच्छा काम कर रहे हो, और I'll appreciate you, और I'll appreciate your association जो इतना शिद्दत से ना ऐसा काम कर रहे हैं। और I'm very much thankful for interacting me for. छोटे भाई बहनों को मेरा प्यार और बड़ों को मेरा प्रणाम। अगर आप भी अपना कोई मैसेज समाज तक पहुंचाना चाहते हैं, या बच्चों तक या उनके माता पिता तक, तो आप नीचे दिए गए नंबर पे हमें मैसेज कर सकते हैं। इंस्टाग्राम आईडी पे भी मैसेज कर सकते हैं। और आप कोई भी बिजनेस टिप्स या फिर जो भी आपने अपनी ज़िंदगी से सीखा है, जो आप चाहते हैं कि आपके बच्चे, आपके अपकमिंग जनरेशन उन चीज़ों को सीखे जो कि बहुत ज़रूरी है, तो आप हमें मैसेज कर सकते हैं। और आप अगर अभी तक आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो इसे सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। इससे हमें मोटिवेशन मिलती है और आगे वीडियोज़ अपलोड करने में। आज के लिए इतना ही।